Rizwan Sheikh drives for both Ola and Uber in Mumbai. He barely survived the nationwide lockdown last year, and this year the Maharashtra government's restrictions on mobility are dealing him another body blow. सुबह से लॉगिन किया है 183 रुपीस है और इसमें एक भी बुकिंग नहीं है. Rizwan is not alone. जब कॉर्पोरेट्स ओपन हुए थे तो हमारा बिजनेस थोड़ा सा अप हुआ था, बट जब अभी फिर से लॉकडाउन इम्पोज किया है तो हमारा बिजनेस एकदम ही गिर गया है. आज की सिचुएशन ऐसी है कि अगर हम मॉर्निंग में गाड़ी निकालते हैं अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock तो पूरे दिन चला के हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ 700, 800, मैक्स टू मैक्स अगर गया तो 900, 1000 रुपीज़. अगर उसमें से भी आप डीजल के या सीएनजी या फ्यूल प्राइस निकाल दो तो हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ 200, 300, 250 बचता है. अब आप बताइए कि उतने पैसे में हम अपनी फैमिली को और हम खुद में कैसे अपने आप को सस्टेन करें. Drivers in Mumbai also complain that their earnings per ride is much lower than the minimum fare prescribed for auto rickshaws or black and yellow cabs. देखिए, राइड के नाम पे तो बहुत राइड होता है, राइड का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन उस राइड के पैसे नहीं मिलते मैडम. अगर हम आज की तारीख में एक टैक्सी वाला 10 किलोमीटर का भाड़ा मारता है तो उसको तकरीबन 250 से 300 रुपया मिलता है, लेकिन वही 10 किलोमीटर का भाड़ा हम करते हैं तो हमको 95 रुपये से लेके 120 रुपया मिलता है. तो सोचिए कितना अंतर है. The Maharashtra Rajya Rashtriya Kamgar Sangh, which represents cab drivers in the state, has approached the Transport Commissioner for a fare revision. In Karnataka, however, rates have already been revised higher, but even that is not proving to be enough. How can we live our life? How can we manage our family? How can we manage our finance? It's only simply sitting at home without any support from the government. So vehicle we bought that on the loan. How can we repay the loans? How can we pay the rents? How can we pay grocery shops payments? How can we manage medicines, health system? Both Uber and Ola have announced initiatives to support drivers over the past year. These range from setting up driver support funds to medical assistance and insurance. But drivers in Maharashtra say these measures have not percolated down to many of them. We have reached both the companies. Our union has sent them multiple letters of, and reminders about meeting certain basic requirements and demands of drivers. None of the companies have come forward to help the drivers. Right. They are talking. There's a lot of PR by both the companies about how they wish to help the drivers and things, but not a single rupee help has reached a single driver. The cabs of many of these drivers are now being seized by financial institutions as they struggle to pay their EMIs with over a year of barely any income. In many cases, drivers themselves are surrendering their vehicles and looking for alternate employment. The association says that now one possible solution is the implementation of the City Taxi Scheme of 2017 and the Katua Committee recommendations, which they say will put an end to unfair and non-transparent pricing. The other is making vaccination for cab drivers a priority. हम ये प्रशासन को अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे ड्राइवर कम्युनिटी को कम से कम वैक्सीनेशन तो दीजिए, ताकि हम जो है आपने बोला कि जितने भी हेल्थ वाले हैं उनको वैक्सीनेशन दे दिया, पुलिस वालों को वैक्सीनेशन दे दिया, बीएमसी वालों को वैक्सीनेशन. हम भी तो इमरजेंसी का काम कर रहे हैं, हम भी तो हॉस्पिटल जा रहे हैं. With Mugdha Warrior in Bengaluru, in Mumbai, Shilpa Rani Pete.